Yeah, I'm surprised to know what is that. Actually, this is a human being. He's just standing like this. Maybe he needs help. He's working, you see. This is how he wants help from people, right? So this is really great. This is a clear human being. And he's just standing like that. Maybe he needs help or something. So आप थोड़ा move करिए तो oh, you see, this is really great, right? So dear friends, what I'm trying to say actually, sometimes people beg on the streets, right? Actually, he's working. So when people work like that, so this is the kind of entertainment he is just giving to the people right here. And this is, I'm really enjoying it. This is in front of Shah Rukh Khan's house, sir, home. I'm just enjoying this place, right? So thank you very much. I want to give you some money as well. All right. There you go. You are welcome. So can I take a photo? Can you? So how long are you working? Come here. Could you please come here? So could you please tell me how long are you working? Could you please go right there? Yes, so then how long are you working? I'll take a photo. Come, no. Video. Videos. So how long are you working? Can you come close? Close out. कितना दिन से आप ये करता है? 1 year. Do you speak English or Hindi? Hindi. 1 year. तो आपका दिमाग में कैसा ये ख्याल आया जो ये अपने इंडिया में एक भी ऐसा मतलब फॉरेनर का स्टाइल कोई नहीं लेके आया था। मेरा इंडिया में मतलब ऐसा कोई करने वाला नहीं था। तो मैं कभी टिकटॉक वगैरह यूट्यूब वगैरह पे देखता था कि ऐसा इंडिया का है। तो मेरे को लगा अपने अंदर में कि ये आर्ट है, ये मैं कर सकता हूँ। उसको मैं प्रैक्टिस किया 2 बार रूम में अपना कि मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो फिर मेरे को लगा अच्छा तो मैं ये कर सकता हूँ। तो मैं इसको फिर एक बार ट्राई करके देखा तो मैं इसको अच्छी तरह से निभा पा रहा था। तो ये मुंबई में मैं लेके आया। Okay, ये तो इंटरनेशनल फॉरेन कंट्री में से आप इंस्पायर हो यूट्यूब पे। So dear friends, what he's trying to say, like he has seen this on YouTube in different countries, and that's why he thought like he can do this. He tried it at home. He tried it several times at home, and actually he did it. And do you have problems? आपको कोई फैमिली से प्रॉब्लम होता है ये करने का? नहीं, फैमिली का प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे को बचपन से आर्टिस्ट बनने का शौक था। क्या बनने का शौक? आर्टिस्ट मतलब मैं कॉमेडियन आर्टिस्ट बनने का था। बट अब नहीं हुआ। मैं नहीं हो पाया। मैं अगर मुंबई आया, मेरे को गांव में कहा कि मुंबई में जाओ ऑडिशन दो को निकल जाओ। यहाँ आने के बाद मुंबई में पता चलता है ऑडिशन नहीं, यहाँ पे आर्टिस्ट कार्ड वगैरह का भी लफड़ा है। तो मेरे फैमिली से उतना मेरे बजट नहीं था मैं आर्टिस्ट कार्ड 1 लाख का बना सकूँ। तो मेरे को लगा ये मैं कर भी सकता हूँ और इससे मैं कुछ पैसे भी जमा हो जाएगा और ये मैं अपना सपना भी पूरा कर सकता हूँ। आप चाहिए था जब हमको आर्टिस्ट बनना है तो आप आर्टिस्ट बन गया। इसी जो आपका ट्रैक जहाँ है उधर नहीं गया, बट आप आर्टिस्ट बन गया। आर्टिस्ट में मतलब मैं ये करके कुछ पैसे भी आ सकते हैं, मैं उस लाइन में जा सकता हूँ। इसको आप इंकरेज हो सकता है और को इंकरेज कर सकते हैं। So dear friends, right, he just came to India to be an artist, but he couldn't be there because of there are some types of money problems he had. Maybe he had to give some money to someone to become a great artist in India, but he couldn't be that. But his mind, his aim, he didn't change. He changed the track, but he didn't change the aim. So he became an artist, and he thinks that this job can be a great job to inspire the people around India and different countries as well. So हम आपको सब परिचित होके हम खुशी है। Thank you very much. What's your name? मेरा नाम विशाल कुमार शर्मा हुआ। शाहरुख कुमार। विशाल कुमार शर्मा। Usal Kumar शर्मा। Usal Kumar Sharma. झारखंड से। Okay, his name is Usal Kumar Sharma, and please pray for him so that he can become a great artist in India and he can inspire the people around the world as well. So thank you very much indeed. Thank you. So can I do like you? Can you show me a style? ऐसे? Second. Thank you very much indeed. Can I have a photo? Yes.